Hello bachcho, let's see the question. The question says that match the column 1, that is the cell structures, with the column 2 with its statistics. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉलम गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 में हमारे पास प्रोवाइडेड है द सेल स्ट्रक्चर्स और कॉलम 2 में हमें दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इट. ओके, तो यहाँ पे क्या है, टाइट जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस एंड द सिनेप्टिक जंक्शन. तो चलिए अगर हम बात करें व्हाट इज द की कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द सेल जंक्शन. ओके, सो यहाँ पे सेल जंक्शन का की कंसेप्ट यूज हो रहा है. चलिए बात करते हैं व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म दैट इज सेल जंक्शन. जब भी हम बात करते हैं सेल जंक्शन की, वी कैन से इट इज आल्सो नोन एज इंटरसेल्यूलर ब्रिज. ओके, सो इसे इंटरसेल्यूलर ब्रिज भी कहा जाता है. जब हम बात करते हैं द टर्म दैट इज इंटरसेल्यूलर, इट मींस ये एक सेल को दूसरे सेल से कांटेक्ट करता है. इट मींस it is acting as a intercellular bridge. Apart from it, we can say these kind of junctions are basically present in the tissues of the multicellular organism. तो जो multicellular organism होते हैं उनके जो tissues है, in that basically we have the presence of the cell junction. In other terms, we can say cell junction is basically a multi-protein complex. ओके, सो ये एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. इट मींस ये काफी सारे प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है. एंड अगर बात करें ये किस में हेल्प करता है, तो वी कैन से द सेल जंक्शंस बेसिकली फैसिलिटेट द कॉन्टैक्ट. ओके, सो ये कॉन्टैक्ट को फैसिलिटेट कर सकता है. और ये कॉन्टैक्ट किसके बीच में हो सकता है, इट कुड बी आइदर बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, तो नेबरिंग सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है. फाइन. या फिर हम कह सकते हैं इट इज क्रिएटिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. तो जो सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है उसके बीच में अगर हमें कॉन्टैक्ट चाहिए, देन वी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल जंक्शन. चलिए बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट कुड बी फाइंड मोस्ट कॉमनली. तो चार टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन विल बी द टाइट जंक्शन. अगर बात करें सेकंड की, देन इट विल बी द adhering junction. The third one here will be the gap junction, and the fourth one will be the synaptic junction. So these are the most common junctions that could be found in a cell structure. चलिए सबकी बात करते हैं. अगर बात करें फर्स्ट वन की, दैट इज टाइट जंक्शन. तो टाइट जंक्शन क्या करता है, बेसिकली स्टॉप करता है, कह सकते हैं ये प्रिवेंट करता है द लीकेज बिटवीन द टू नेबरिंग सेल, या फिर कह सकते हैं सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. इट मींस ये क्या करता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाता है जिसके वजह से लीकेज नहीं हो पाता. ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स नहीं हो पाते एक दूसरे के बीच में. फाइन. तो हमारा जो टाइट जंक्शन है, वी कैन से द टाइट जंक्शन विल गेट मैच्ड विद द third one, because the tight junction here is basically establishing a barrier in order to prevent the leakage of fluid across the epithelial cell. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर सिस्टम बनाता है जिससे जिससे क्या होता है, जो लीकेज है वो स्टॉप हो जाता है. सो वी कैन से हियर द ए विल गेट मैच विथ 3. फाइन. चलिए बात करते हैं सेकेंड वन की. यहाँ पे जो सेकेंड है दैट इज द अडहेरिंग जंक्शन. अगर हम बात करें अडहेरिंग जंक्शन की, तो अडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द नेबरिंग सेल. तो नेबरिंग सेल में अगर हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना हो, देन वी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ दिस अडहेरिंग जंक्शन. अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की यहाँ पे, तो दिस अडहेरिंग जंक्शन विल गेट मैच्ड विद फर्स्ट वन, दैट इज इट इज सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म अ शीट. तो ये नेबरिंग सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है. दैट्स व्हाई हियर वी कैन राइट दैट बी विल गेट मैच्ड विथ 1. ओके, now let us talk about the third one, that is the gap junction.
So whenever we talk about this gap junction, we can say it will help, or we can say it will facilitate the communication between the two cells. Okay, so ये communication में help करता है. So here if we look at the different options, then we can say this C will get matched with the fourth one. That is, the gap junctions will facilitate the cytoplasmic channels to communicate between the adjacent cells. Okay, तो सेल्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन चाहिए या फिर सेल और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर कम्युनिकेशन चाहिए, then we require the presence of this gap junction. That's why the C will get matched with the fourth one. Now we are remaining only with one option. Okay, so if we'll talk about the option D, that is the synaptic junction, so we can say this kind of junctions are most commonly found in case of the nervous system. तो नर्वस सिस्टम में या नर्वस टिश्यू में इस टाइप का सिनेप्टिक जंक्शन देखने को मिलता है एंड ये किसमें हेल्प करते हैं, बेसिकली हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स. ओके, तो केमिकल सिग्नल्स को अगर हमें एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में अगर ट्रांसफर करना है, देन वी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ दिस सिनेप्टिक जंक्शंस. मोस्ट कॉमनली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो ट्रांसफर होता है या इनका जो मूवमेंट होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू दिस सिनेप्टिक junction. That's why this D will get matched with a 2 1. So here we can write that the fourth, or we can say D will get matched with 2. So here we can say that if we talk about the options, that A is getting matched with 3, B is getting matched with 1, C is getting matched with 4, and the D is getting matched with 1. Now if we look at the different options here, then we can say the correct and the only correct answer for this question will be option C. So here we can write that the correct answer will be option C. So option C is the final answer for this question. I hope you understood well. Best of luck.